Okay, so welcome everyone. Now in this lecture we are going to learn about the design of the tension member. Okay, in the previous lecture we have seen the analysis of the tension member. Now in this particular lecture we are going to see how to design a tension member. So the numerical is given to us. Design a single tie member. Okay, single angle means we have to use a single angle, no back-to-back use of the angle. And the tie member means it is a tension member. We have to resist a factor force of the 190 kilonewton. Okay, so we are going to design such that the strength designed by the TDG, TDM or the TDB1 should be greater than the 190 kilonewton. The length of the member is given as a 3 meter. The connection type is given. We have to the connection is your bolted connection. Okay, जो आपका connection होगा bolted connection है with the gusset plate. Okay, again here grade of the steel is given as a Fu410. Again for the connection the bolt is given. The diameter of the bolt will be M16 as well as the grade of the bolt should be 5.6. Okay, now we don't know which angle we are going to use. Okay, अभी टाइम मेंबर है डिजाइन करना है मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर मेंबर. ओके, जो भी आपके IS सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन है, वो आपको सिलेक्ट करने हैं. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द maximum load which can take, and if that particular load is greater than 190 kilonewton, in that case our particular member will be safe and we can use that particular member in the structure. So here first finding out the trial member. Okay, now we cannot just randomly select the member. Okay, ऐसा नहीं कि आपके पास 190 किलोमीटर तो आप randomly select नहीं कर सकते. ठीक है, I will use 90 by 60 by 6 mm member. Okay, first we have to calculate the gross area which will be required. Okay, we have to first calculate the gross area of that particular section. Okay, now the gross area will be defined by first TDG. Okay, first gross area will be defined by the TDG. Okay, जो आपका TDG का फॉर्मूला है, TDG equals to that is a load at the gross yielding. Okay, जो भी आपका failure due to the gross yielding, TDG will be equals to AG multiplied by Fi multiplied by gamma m0. Now whatever our load is given, that particular load is also TDG or TDN. उसको हम क्या बोलेंगे, TDG या फिर TDN. Therefore we know the value of the TDG, we also know the value of the Fi, we also know the value of the gamma m0, so we can easily find out the value of the AG की वैल्यू जो है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. So therefore from this particular formula we can calculate the value of the AG, that is the gross area required for our particular section. Similarly another formula is there. Okay, TDM का formula भी आपके पास है. Now here the TDM formula is little bit different from our beta value. Okay, obviously we cannot calculate the beta. Okay, beta की वैल्यू जो हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी सेक्शन नहीं है. Okay, we cannot just randomly assume a particular section and calculate the beta value. So therefore the IS code gives us the another formula for the preliminary sizing of that particular member. Okay, IS800 gives us the this particular formula for the preliminary sizing. Means हमारा जो particular member है उसका size define करने के लिए आपको formula दिया जाता है, where TDN will be equals to alpha multiplied by AN multiplied by FU divided by gamma m1. Again here the FU is known to us, gamma m1 is known to us, TDN is known to us. Okay, from that we can easily calculate again the value of the AN जो है हम calculate कर सकते हैं. Here the value of the alpha will depend upon the number of bolt in our connection. Okay, agar if the particular member is of the 1 to 2 volts, in that case it will be just 0.8, the value of the alpha will be equals to 0.6. If it is a 3 volts, in that case it will be 0.1, and if it is a 4 or more volts, in that case it will be 0.8. Also in case of the wed connection, the alpha value will be 0.8. so obviously here the load is 190 kilonewton. So obviously we know that in this particular case the number of volt is going to cross 4, therefore we are taking the value of the alpha as 0.8. Okay, so again we know the value of the alpha. So by putting all of this particular value we can calculate the gross area required as well as the net area required. Okay, from that we are going to select the member. So first putting the all of this particular value in the TDG formula, जो हमारे पास TDG formula है उसमें अगर हम value input कर देते हैं, उसमें अगर हम वैल्यू इनपुट कर देते हैं, इन दैट केस TDG विल बी इक्वल्स टू 190. अगेन दिस इज इन द किलो न्यूटन. ये जो आपका किलो न्यूटन है इसलिए उसको हमने उसको हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना है. देयरफॉर मल्टीप्लाइंग विद 1000, 190 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विल बी इक्वल्स टू AG मल्टीप्लाइड बाय अगेन Fi is 250, gamma m0 is 11. So that we will from solving this particular numerical we get the value of the AG. We get the value of the AG. Similarly for the TDN, again TDN in the TDN formula putting all of the particular values, 190 multiplied by again 1000 for the converting the kilonewton into Newton equals to alpha की value आपके पास 0.8,
multiplied by an is the value which we are going to find out, multiplied by fu is your 410 Newton per mm square divided by gamma m. So again, solving both of the numerical, we get the value of the AG, that is the gross area, as 836 mm square, whereas the net area AN as the 724 mm square. Now we have to calculate the area required. Okay, we have to calculate the area for the particular section, required area for the particular section. So therefore this particular जो आपका AG है उसको हम increase करेंगे by the 20 to 25%. So therefore AG required, that is the gross area required, will be equals to 1.2 multiplied by 836. Okay, 1.2 multiplied by 836, so it will be equals to 103 mm square. Now here we are increasing the area by 20 to 25%. Another time some of the books might find it, in some of the books you might find out the area is increased just 10%, or in some of the cases the area will not be increased. Okay, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर एरिया जो है वो इंक्रीज करना है, that depends upon the design. Okay, we are increasing this particular area to be on the safe side. Okay, if we are taking the value of the AG as lower, in that case our whatever our particular member is there, it might not satisfy our check. Okay, so we might have to redesign all of this particular section. Therefore, to avoid that, here we are increasing the AG by the 20 to 25%. So by increasing this particular area by 20%, we get the AG required, that is the gross area of this particular section required, will be equals to 1033 mm square. So from the steel table, now we are going to refer the steel table, and we are going to search for the particular we are going to search for the sections which are larger in the section, which are whose area gross area is greater than 1003 mm square. हम क्या करेंगे, स्टील टेबल यूज करेंगे. स्टील टेबल में हम AG सर्च करेंगे कि कौन से मेंबर का AG जो है आपका, ऑब्वियसली हियर द एंगल सेक्शन इज देयर, देयरफॉर वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द एंगल सेक्शन. Whatever the particular section is there which has a greater AG, that is gross area, than 1003 mm square, we are going to select that particular section. Now again जो भी आपका particular ऐसा है, अभी we are going to search for the larger than this. Okay, 1003 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम 1500 वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे. Okay, we have to bear in mind that this area should not be very much higher. Okay, जो भी हम सेक्शन लेने वाले हैं उसका एरिया बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, or it will be a over safe design. Okay, we have to consider a safe design, but we also have to consider it for the economical section. Okay, so here we cannot just take the trial section of the area 1500. Rather we are going to look out for the section which has the close to this particular area. So we are going to see here, in this particular case we are going to select a trial section of 100 by 75 by 6 mm, for which the area gross area is 1010 mm. Okay, so obviously हमें रिक्वायर्ड था 1003. ओके, 1003 mm स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड था, और हमने अभी सिलेक्ट किया है 1010. So obviously these are close. Okay, so we are going to select this particular area for our calculations. Okay, next, once we have selected the trial section, now we are going to this first step will be your design of the connection. ओके, एक बार का आपने सेलेक्ट कर दिया कि ठीक है मुझे 100 by 75 by 6 mm का जो मेंबर है वो यूज करना है. नाउ आई हैव टू डिजाइन अ कनेक्शन बिटवीन द गसेट प्लेट एंड द पर्टिकुलर मेंबर टू कैरी अ लोड ऑफ द, हमें कितना कैरी करना है लोड, दैट इज 190 किलो न्यूटन का लोड मुझे कैरी करना है. ओके, देयरफॉर फर्स्ट कनेक्शन डिजाइन अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द shear capacity of the bolt as well as the bearing capacity of the bolt. Depending upon that, we are going to calculate the number of bolts required, that is your connection design. So first calculating the shear capacity of the particular bolt. Okay, now again here only a gusset plate and the member is there, therefore only दो members है आपके. Okay, एक टॉप पे आपकी gusset plate होंगी, okay, बॉटम पे आपकी gusset plate, टॉप पे आपका member. So here it will be a single shear. यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, ये single shear होने वाला है. So therefore we are going to assume that the shear plane, one of the shear plane is located in the threaded section. एक ही आपका यहाँ पर क्या होगा, shear plane जो होगा आपका, shear plane will be equals to 1, and we are assuming that that particular shear plane is cutting through the threaded area. Okay, so next NN, so therefore the NN, that is the shear plane cutting through a threaded area, will be equals to 1, and shear planes cutting through the shank area will be equals to 0, as only one shear plane is there and that particular shear plane is cutting through the threaded area. Okay, so next ANB is your next sectional area in the threaded section will be equals to 0.78 multiplied by ASB. ASB is your shank area.
तो shank area will be equals to pi by 4 multiplied by diameter square. Diameter is your m16 bolt है आपका, okay, m16 bolt है, therefore diameter will be equals to 16 square multiplied by 0.78, that will give us the A and B. So A and B will be equals to 156.83 mm. Next is your VDSB. So therefore calculating the shear capacity, that is the design shear strength of the particular bolt, that is equals to VDSB will be equals to FUB divided by √3 multiplied by gamma MB, then whole term multiplied by the NN multiplied by ANB, then plus NS multiplied by ASB. अभी NS की वैल्यू जो आपकी वो 0 है, therefore this particular whole term will be equals to, ये जो आपकी whole term है वो 0 हो जाएंगे. Whereas जो FUB की वैल्यू आपकी, दिस विल डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ द बोल्ट. आपका ग्रेड है 5.6, देयरफॉर 5 अगर हम सिलेक्ट करते हैं, इन दैट केस FUB विल बी इक्वल्स टू 500 न्यूटन पर mm square. So therefore here FUB value will be equals to 500. Gamma MB will be equals to again 1.25 multiplied by depending upon U, the gamma MB will be equals to 1.25. ultimate stress ले, therefore यहाँ पे 1.25 multiplied by NN की वैल्यू आपकी 1, okay, और ANB की वैल्यू हमने निकाली 156. Putting all of this particular value in our numerical or our equation, we get the VDSB, that is the design strength of this particular bolt in the shear, as 36.22 किलो न्यूटन. अगेन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए टू कन्वर्ट इन द किलो न्यूटन. यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेंगे दैट विल बी इन द न्यूटन. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किलो न्यूटन लिखे, बट अगर इसको आप डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 100 कर 1000 कर देते हैं, इन दैट केस इट विल बी इक्वल्स टू, it will be in the kilonewton. First, so shear capacity is done. Next we are going to calculate the bearing capacity of the bolt. Okay, bearing capacity of the bolt भी हमको निकालनी है. Now again for the bearing capacity we can calculate the E or P. Okay, ऐसा नहीं कि हमको assume करना है, we can also calculate the E. Okay, 1.5 D0 इस तरह से, या फिर P will be equals to 2.5 multiplied by D. इस तरह से भी आप calculate कर सकते हो. Or you can also assume the E and P as a 40 mm, that is obviously this should be greater than 1.5 D0 or 2.5 D0. दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं. अभी यहाँ पर थोड़ा इजी होने के लिए मैंने डायरेक्टली assume कर दिया कि E equals end distance and the pitch distance should be equals to 40 mm. So KB will be smaller of this particular following, that is E divided by 3 D0, P divided by 3 D0 minus 0.25, then FUB divided by FU and 1. Okay, इसमें से जो भी आपका मिनिमम होगा that will be equals to KB. So obviously E divided by 3 D0 हमको वैल्यू हम इनपुट करेंगे. अगेन D0 will be equals to diameter of the hole. So here the diameter of the bolt is 16 mm. So obviously we know that for the 16 mm we are going to add 2 mm to get the diameter of the hole. So here the diameter of the hole, that is the D0 or D0 will be equals to 16 plus 2. So 40 divided by 3 multiplied by 16 plus 2, that will give us the value of the value of the first equation as 0.74, then value of the second equation equals to 0.49. So obviously this is your lower value or the minimum value, therefore value of the KB should be taken as a 0.49. As well as here thickness minimum thickness आपको लेनी है. So here the गसेट प्लेट की थिकनेस का आपको दिए नहीं है, बट एंगल सेक्शन जो हमने वो 6 mm का लिया है, therefore the thickness will be equals to 6 mm. So putting all of this particular value in our section, we get 2.5 multiplied by KB multiplied by diameter of the bolt multiplied by thickness multiplied by FU divided by 1000 to convert it into the kilonewton. This gets the value of the V and PB as a 48.28 kilonewton. Now this is your nominal shear strength. You have to calculate the design shear strength. So therefore dividing it with the gamma M0, that is the 1.20, sorry, gamma MB, that is equals to 1. Gamma M1, that is equals to 1.25. So that will give us the VDB as 38.86 kilonewton. So putting all of this particular value, we get the minimum of this particular two. ये जो आपकी शीयरिंग स्ट्रेंथ और बीयरिंग स्ट्रेंथ इन दोनों से जो मिनिमम होगी, दैट विल बी योर बोल्ट वैल्यू. सो बोल्ट वैल्यू इज 36.22 किलो न्यूटन. सो देयरफॉर नंबर ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल्स टू लोड डिवाइडेड बाय द बोल्ट वैल्यू. सो लोड है आपका, लोड था 190 किलो न्यूटन, द बोल्ट वैल्यू वाज 36.22 किलो न्यूटन. देयरफॉर वी गेट द नंबर ऑफ बोल्ट इक्वल्स टू 6. So number of bolt equals to 6. Therefore we are going to provide this number of bolts in the single row. यहाँ पर 6 नहीं है, 5 point something आंसर आया होगा, उसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया 6 में. So we are going to provide the 6 number of bolt in the single row. And again we are going to assume that the gusset plate is of the 8 mm. Okay, gusset plate आपको आगे कैलकुलेशन में लगेंगे, इसलिए here only consider 8 mm gusset plate is there. And again as it is said, जब भी आप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, it is preferred that the longer leg is connected to our particular section, so that shear lag effect जो है वो मिनिमम होना चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं, लॉन्गर लेग को कनेक्ट करते हैं. ओके, shear lag effect कम करने के लिए.
अगर हम उल्टा करेंगे इन दैट केस लॉन्गर सेक्शन अगर आपका अनकनेक्टेड रहेगा इन दैट केस अगेन द shear lag effect will be higher, so the strength will be reduced. So therefore here we are going to connect the longer leg to the particular gusset plate. Okay, so this is how the particular section will look like. Okay, this is how the diagram for the particular section will look like. Okay, 8 mm की गसेट प्लेट है, उसको हमने क्या किया है 1 2 3 4 5 6 number of the bolts are provided. Again here end distance और pitch distance जो है end और pitch distance आपका क्या है 40 mm, therefore directly 7 multiplied by 40. Okay, this will be your gauge distance. Okay, we are not consider gauge, हम consider करेंगे. हमारा section जो है वो 100 by 75 by 6 mm का हमारा section है. Okay, here we are considering that the gauge is of the 16 mm if the 100 mm leg is connected. So here obviously the 100 mm that is the longer leg is connected, therefore G that is the gauge distance is taken as a 60 mm. Okay, so starting once we have designed this particular member, okay, we have designed the angle section with the number of bolt as well as we are selected the IS800 multiplied by 75 by 6 mm for to take the 190 kN load. Okay, एक बार का हमने कनेक्शन डिजाइन कर दिया, एंगल सेक्शन भी सिलेक्ट कर दिया. Now we have to check this particular member for the safety. Okay, if this particular member is going to safe in the yielding or the block shear or whatever the failure types are there, if this particular section is safe, in that case we can say that our design is safe. So first next step will be your check for the design strain. So first this check for the design stress will be the TDG, that is the strain governed by the yielding of the gross section. जो भी आपका सेक्शन है उसकी yielding है उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे. Now again we know the formula of the TDG. I think सबको मालूम है formula TDG equals to AG multiplied by FY divided by gamma m0. Again here we already know the value of the AG. Okay, value of the AG आपको directly हमने क्या किया, AG से ही हमने जो है वो select किया है. So therefore here value of the AG equals to 1010. FI की वैल्यू आपका पता है, gamma m0 की वैल्यू पता है. If we can put that particular value, we get the directly we get the TDG as a 229 kilonewton. Okay, 229.55 kilonewton की आपकी वैल्यू जो है वो TDG की आपको मिल जाती है. Okay, similarly next will be your strength, checking for the design strain as for the strain governed by the tearing of the critical section or the rupture. Okay, now again here rupture में आपका फॉर्मूला आपको पता है कि फर्स्ट आपको बीटा जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है. सो देयरफॉर हियर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द बीटा फैक्टर. ओके, अगेन वैल्यू ऑफ द बीटा फैक्टर W, दैट इज द आउटस्टैंडिंग लेग विड्थ. जो भी आपका W है दैट इज आउटस्टैंडिंग लेग जो है आपका उसकी विड्थ. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है आपका 90 mm का जो है आपका वो कनेक्टेड है और अनकनेक्टेड जो आपका वो कितना है, वो है unconnected is of the 75 mm. So therefore here the W, that is the width of the unconnected leg, will be equals to 75 mm. Next is your thickness. Obviously thickness here will be thickness of the member is 100 by 75 by 6, therefore the member is of the 6 mm. So here therefore thickness will be equals to 6 mm. Next is your Fy and Fu की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है. Fu 410 ग्रेड है, therefore we can say that whatever the value is 250 and the 410. Next is the value of the Bs. Okay, Bs is your shear lag width. So again here the shear lag width will be equals to जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है उसका आउटर पोर्शन. ओके, जो भी आपका फार एंड होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आउटर पोर्शन टू अवर जो भी हमारा बोल्ट है वहां तक जो भी आपका लेंथ होगा दैट विल लेंथ इज योर Bs. Okay, so here again it will be equals to this particular W. The W है आपका 75 प्लस ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज योर G और G की वैल्यू आपकी कितनी है, गेज डिस्टेंस इज गिवन एज अ 60 mm. So it will be equals to 60 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 75. So 60 प्लस 75 और यहाँ पे अगेन जैसे हमने प्रीवियसली देखा है कि यहाँ पे दो जो है हाफ विड्थ जो है वो एक्स्ट्रा आ जाती है यहाँ पर दो बार. Therefore a full half depth should be deducted. So therefore it will be equals to 75 plus 60 minus 6. Okay, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो डेप्थ है वो दो बार आ जाती है एक्स्ट्रा. therefore we are going to calculate the center line length. So center line length कैलकुलेट करते वक्त आपको हाफ विड्थ जो है या फिर सॉरी फुल थिकनेस जो है आपको वो माइनस करनी होती है. Therefore the Bs value will be equals to 129 mm. Next is your LC, that is the length of the connection. Now the length of the connection will be the distance between the first bolt. Okay, जो भी आपका फर्स्ट बोल्ट होगा और लास्ट बोल्ट होगा इन दोनों में का जो भी आपका डिस्टेंस होगा, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस will be equals to the this will be equals to the length of the connection. Here that will be equals to ये एक P हो गया आपका, this is your second P, this is your third P, this is your fourth P and this is your fifth P. Except total number of the 5 P's distance are there. Therefore it will be equals to 5 multiplied by P's distance कितने आपका 40 mm. So 5 multiplied by 40 will be equals to 200 mm.
So here the length of the connection will be equals to 200 mm. Okay, जो भी आपका first bolt है and आखिरी bolt है, okay, first and last bolt, the distance between these particular two bolts will be known as the length of the connection. So we get the all of these particular values. Putting in the formula, we get the value of the beta as a 1 point. We get the value of the beta as 1.027. So obviously it is less than 1.44 and greater than 0.7. So above it is okay to write this particular value. Okay, you can use this particular value. So putting this particular value in our original formula, we have original formula as a Tdn equals to 0.9 multiplied by ANC multiplied by Fu divided by gamma m1 plus beta. ये आपका पास original formula है, उसमें अगर हम value input कर देते हैं, in that case we can easily use. So again in this particular case ANC and AGO is unknown to us. So first ANC, again net area of the connected lead, again हम previous analysis of the member में हम देख चुके हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करना है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट हाउ टू कैलकुलेट द ANC. ओके, अगेन बी माइनस बी के वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, आपको हाफ डेप्थ जो है वो माइनस करने हो जाएंगे. एन डी जीरो, अगेन नंबर ऑफ द बोल्ट इज 1, डी जीरो इज योर डायमीटर ऑफ द बोल्ट. सो अगेन AGO अगेन सिमिलरली सेम हमने कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द TDN, इफ यू इनपुट द ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द TDN विल बी इक्वल्स टू 240.75 किलो न्यूटन. ओके, next is your strain governed by the block shear. Okay, again similarly type of the example के हमने block shear calculate किया है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं. Block shear will be defined by this particular two formula. Okay, again here we have to calculate the AVG, ATN, AVN and ADG. that is आपका shear plane होगा या फिर tension plane होगा, वहाँ का आपका gross area और net area जो है आपको calculate करना है. So in this particular portion, ये जो आपका यहाँ पर ब्लू कलर में जो आपका पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द ब्लॉक विच आर गोइंग टू कम आउट. ओके, ये जो ब्लॉक है आपका ये बाहर निकल के आने वाला है. सो यहाँ पे आपका ये जो हॉरिजॉन्टल होगा, दिस विल बी योर shear portion and again this will be your tension portion. Therefore AVG, that is a gross area in the shear, will be equals to this particular जो आपकी लेंथ होगी, this particular length. So this particular length will be equals to एक जो P है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6. टोटल नंबर ऑफ द P आर 6. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय P डिस्टेंस कितना है 40. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. अगेन यहाँ पे क्या है, आपका एंगल फेल हो रहा है. देयरफॉर वी हैव टू टेक द थिकनेस ऑफ द एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 6 mm. If the gusset plate was failing, in that case we have taken the thickness of the gusset plate. Here the angle is failing. जो आपका ब्लॉक जो निकल के बाहर जो ये ब्लॉक निकल के आने वाला है, दिस इज ऑफ द, ये जो है आपका एंगल सेक्शन का है. ओके, देयरफॉर वी आर गोइंग टू टेक द थिकनेस एज अ 6 mm. So 6 multiplied by 40 multiplied by 6 mm thickness, that will give us a gross area in the shear. Similarly the net area in the shear जो भी आपकी width होंगी, that is 6 multiplied by 40, that is equals to 240. उसमें से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बोल्ट होल जो है वो माइनस करने. सो नंबर ऑफ द बोल्ट होल, यहाँ पर ये जो बोल्ट होगा आपका 1 1 1 1 1 और ये जो आखिरी का आपका बोल्ट होगा, that particular आखिरी का जो बोल्ट होगा आपका, this will be taken as a 1 bolt, this will be taken as a 1, again this will be taken as a 1, this bolt will be taken as a 1, this bolt will be taken as a 1 और ये आखिरी का जो बोल्ट होगा, that will be taken as a half. So therefore 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and the last is half. Therefore it will be equals to, number of the bolt will be equals to 5.5 multiplied by the bolt hole. Again bolt hole is 18 mm multiplying with the thickness. Again here thickness जो आप कौन सी ले रहे हैं, जो पार्ट आपका फेल हो रहा है. ओके, हियर द एंगल, एंगल का ब्लॉक जो निकल के आ रहा है, देयरफॉर वी आर टेकिंग द थिकनेस ऑफ द 6 mm. दैट विल गिव अस द नेट एरिया इन द शेयर एज 846 mm square. Next is your gross area in the tension. Again this particular जो आपका, this particular vertical area will be gross area. Okay, so here we know that this particular G is G की वैल्यू आपको पता है, this particular G is a 60 mm और टोटल भी आपको पता है कि टोटल दिस पर्टिकुलर मेंबर इज ऑफ द 100 mm. जो टोटल मेंबर है आपका वो है 100 mm का. सो 100 minus 60 will give us this particular portion, this particular width or the depth or the width, that is equals to 40 mm. So therefore it will be equals to 100 minus 40 multiplied by the again 6 mm, that will give us 240. Similarly the net tension area, आपका number of the bolts होल जो आपको माइनस करने से ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ ये जो बोल्ट है आपका, यही आपका हाफ बोल्ट कंसिडर किया जा रहा है. Therefore हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 multiplied by 18 multiplied by 6 will be equals to 186 mm square. So putting all of this particular value in our original equation, we get the value of the TDB1 as a 243.86 kilonewton and TDB2 as a 198.73 kilonewton.
Again, summing the all of this particular value, we get the TDJ as a 2 to 9.55 kilonewton, TDN equals to 245.75 kilonewton, TDB1 equals to 243.86, TDB2 equals to 198.73. So therefore, and the strength of the connection equals to again strength of the connection will be equals to 6 number of the bolts are there, and for the each bolt the bolt value is 36.22. Therefore, the strength of the connection will be equals to 270.32 kilonewton. So इसमें से जो minimum होगा that will be your strength. So therefore the design strength will be equals to TDB2, that is 198.73. So obviously it is greater than 190. Therefore we can say that our particular section is okay or safe for our design जो है आपकी वो है safe in the limit state of the collapse. Okay, if you are going to find out the efficiency, हम calculate कर सकते हैं जो भी आपकी strength है उसकी strength of this particular portion divided by the जो भी आपकी TDJ that is the yield strength, उसको हम divide कर देंगे. In that case we get the efficiency of the tension member as 86.57%. Okay, now like last step we are already check this particular section for the limit state of the collapse, but we have not take it for the limit, we have not check it for the limit state of the serviceability. Therefore checking it for the stiffness, that is the limit state of the serviceability. ओके, स्टिफनेस चेक करने के लिए अगेन आईएस कोड आपको देता है कि वी हैव टू अगेन स्टिफनेस चेक करना मतलब क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो. जो भी आपका पर्टिकुलर सेक्शन है उसका स्लेंडरनेस रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. नाउ ये जो स्लेंडरनेस रेशियो केएल वगैरह या फिर जो भी आपका स्लेंडरनेस रेशियो, इट इज मोर रिलेटेबल इन केस ऑफ द कॉम्प्रेशन मेंबर. ओके, कॉम्प्रेशन मेंबर में ये ज्यादा रिलेटेबल है इन केस ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो जो केएल वगैरह है जो आपका. ओके, डिपेंडिंग अपॉन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर इज मोर रिलेटेबल इन द कॉम्प्रेशन मेंबर, बट स्टिल टेंशन मेंबर में भी वो हम अप्लाई कर सकते हैं. इन केस ऑफ द टेंशन मेंबर द केएल द स्लेंडरनेस रेशियो विल बी गिवन एज स्लेंडरनेस रेशियो आपका कैसा होता है, केएल डिवाइडेड बाय आर. ओके, आर मिनिमम. ओके, केएल डिवाइडेड बाय आर मिनिमम. ओके, आर केएल इज योर this is your costed, okay, which we multiply to the length to get the effective length. Okay, टेंशन मेंबर इसलिए जो भी हम करने वाले हैं कि कोई वन कर कंसीडर करने वाले हैं, लेंथ इज योर 3 मीटर and r minimum we can get it from the steel table. For our particular section the r minimum is 15.9 mm. So slenderness ratio will be equals to KL divided by r minimum. KL K जो है हमने 1 कंसीडर किया, लेंथ इज योर 3 मीटर, so 3000 divided by 15.9, that will give us the KL, that is the slenderness ratio for our particular section as 188.77. So here the maximum slenderness ratio for our particular section for the tension member is 250. Okay, limiting value जो आपकी वो 250 की है, so obviously our particular section is 188. आपकी हमारा जो slenderness ratio है 188, so it is less than 250. therefore we can see again our जो particular section is safe in the or the limit state of the serviceability also satisfied. तो previously हमने limit state of the collapse satisfy किया, अभी limit state of the serviceability satisfy किया. therefore our design is perfect. so we can carry out our particular section. ज़्यादा भी हमारा इकोनॉमिक, ज़्यादा भी हमारा ओवर सेफ भी नहीं रहा और लेस सेफ भी नहीं रहा. 190 किलोन्यूटन था अपना जो पर्टिकुलर मिनिमम स्ट्रेंथ था 198. सो ऑब्वियसली आवर सेक्शन इज क्वाइट इकोनॉमिकल. ओके, सो स्टार्टिंग विद अवर सो दिस विल बी हाउ यू कैन डिजाइन अ सिंगल एंगल टाइम मेंबर. यहाँ पर सिंगल है, आप डबल टाइम मेंबर भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं आपको सिर्फ जो एरिया वगैरह है वो वहाँ पे आपको डबल कंसिडर करने हैं. वट एवर वी आर डूइंग इन द एनालिसिस ऑफ द सेक्शन वी हैव टू डू द सेम हियर. ओके, ओनली द फर्स्ट 2 steps are different, where we have to calculate first the trial section we have to calculate, next we have to design the connection. ओके, ये दोनों स्टेप होने जाने के बाद आपका अदर स्टेप्स आर सेम. आपको TDN कैलकुलेट करना है, TDG कैलकुलेट करना है, ओके, TDB कैलकुलेट करना है. जो प्रीवियसली कैलकुलेट किया था वही सिमिलरली कैलकुलेशन आपको करना है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Again here we have to design a single time member to resist a factor tensile force of the 190 kN. Again here previous numerical जो है वही है, लेंथ भी आपकी 3 मीटर है, टेंशन मेंबर भी आपको वही डिजाइन करना है, लोड भी आपका गिवन है 190 kN, सिंगल एंगल ही आपको डिजाइन करना है. बट हियर द कनेक्शन इज डिफरेंट. ओके, हियर वी हैव टू प्रोवाइड द वेल्डेड कनेक्शन विद द गसेट प्लेट. जो भी हमारा वेल्डेड कनेक्शन है, गसेट प्लेट है, उसके साथ हमको क्या करना है, वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करना है. ओके, सो प्रीवियसली जैसे हमने ट्रायल सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया थे वही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी यूज करना है. सेम फॉर्मूला इज देयर एज द TD जो है वो आपका सीरीज में TDG, TDN, TD 190 kN है, देयरफॉर सेम. सो AG AN इज सेम. ओके, AG was 836 mm square, AN was 724 mm square. Okay, so now here AG required will be equals to 836 mm square. Okay, so here
ऑब्वियसली प्रीवियस इसमें क्या था, आपको बोल्ट होल प्रोवाइड करने थे. ओके, वी हैव टू प्रोवाइड द बोल्ट होल. देयरफॉर जो आपका सेक्शन है उसका नेट एरिया रिड्यूस होते जा रहा था, एज वेल एज ब्लॉक शेयर में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा था. देयरफॉर जो स्ट्रेंथ थी आपकी वो रिड्यूस हो रही थी. बट हियर देयर इज नो बोल्ट होल, देयर इज नॉट नेट सेक्शन. हियर देयर इज नॉट नेट सेक्शन, नो बोल्ट होल. देयरफॉर वी कैन जो भी आपका एजी रिक्वायर्ड है वही हम अब डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं, rather than increasing it by any 20%, 10% और whatever that particular increment is there. उसको विदाउट इंक्रीज करके हुए भी हम डायरेक्टली एजी कैलकुलेट कर सकते, जो ट्रायल सेक्शन है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. Cause here there is no bolt hole, therefore there will be no reduction in the strength of our particular member. Therefore इसीलिए क्या हो जाता है आपका पर्टिकुलर, जब भी हम वेल्डेड कनेक्शन कंसिडर करते थे तो वेल्डेड कनेक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा सुटेबल हो जाता है या ज्यादा इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू द बोल्टेड कनेक्शन. एज दिस पर्टिकुलर जो आपका ओरिजिनल सेक्शन है वो पूरा का पूरा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यूज हो जाती है. सो हियर adopting our required AG required was 836 mm square. Therefore adopting the trial section of the 90 by 60 by 6 mm for which the AG is equals to 865 mm square and R minimum equals to 12.8 mm. So obviously 836 required है और हम provide कर रहे हैं 865, so it will be okay. So again once we have designed the once we have selected the trial section, next is your obviously design of the connection. जो भी हमारा connection है उसकी design. Now previous में जो था those were for the bolted connection. Here we are going to design the welded connection. So again calculating the first step will be your strength of the weld or also the weld capacity. First calculating the minimum size of the weld. Okay, again as per the IS code अगर आपका particular जो section है उसकी thickness is less than 10 mm. Okay, और particular section is obviously लेस देन 10 mm है आपका. ओके, सो 6 mm के आपकी जो सेक्शन है वो 6 mm का है, देयरफॉर इट इज लेस देन 10 mm. सो फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन द मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड एज पर IS कोड इज 3 mm. सो नेक्स्ट इज योर मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड. अगेन मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड विल बी डिफाइंड बाय व्हाटएवर आवर थिकनेस इज, जो भी आपका मेंबर है उसकी थिकनेस माइनस 1.5. सो 6 माइनस 1.5 विल बी इक्वल्स टू 4.5 mm. दिस इज फॉर द स्क्वायर जो आपका एज होगा, स्क्वायर एज के लिए आपका दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज देयर. बट वी आल्सो हैव द राउंडेड एज इन द एंगल सेक्शन. ओके, हमारा जो एंगल सेक्शन है एक एज आपका स्क्वायर सेक्शन होगा, अनदर एज विल बी ऑफ द राउंडेड सेक्शन. देयरफॉर फॉर दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई 3/4 multiplied by 6. in that case again the maximum size of the weld comes as 4.5. so हमारा जो भी weld size हम adopt करने वाला है, that particular weld size should be between 3 to 4.5 mm. Therefore here adopting the weld size of the 4 mm. so here we are going to adopt the weld size of the 4 mm and also the fillet weld of the shop fillet weld. Again here it is not given whether it is the fillet weld or the shop fillet weld or the butt weld, but here we are again assuming that the particular जो भी आपका sorry जो भी fillet weld है that is the shop fillet weld. It is welded at the shop rather than the field. Therefore the factor the safety factor will be equals to 1.25 rather than the 1.5. so we have adopted, we have selected the weld size. Next is calculating the strength of that particular weld side. so design strength of the fillet weld will be equals to FWD, that is the design strength of the weld will be equals to T, that is your throat thickness multiplied by FU multiplied by divided by root 3 multiplied by gamma mw. so we know the gamma mw, we know the fu. We have to calculate the throat thickness. throat thickness जो आपकी रहती है that will be equals to 0.7 multiplied by the whatever our size of the weld is there. so here 0.7 multiplied by size of the weld is 4 mm. so 0.7 multiplied by 4 multiplied by fu 410. Gamma mw is 1.25. that will give us the FWD, that is the design strength of the fillet weld per mm will be equals to 530.24 Newton per mm. okay, so this is your design strength of our particular weld. जो भी हमारी 4 mm का weld है it will be able to carry a 530 Newton load for 1 mm weld. so now we have to calculate the length of the weld which is required to carry our load of the 190 kilonewton. so length of the weld required will be equals to whatever our load is, load divided by our strength of the weld per mm. okay, so again here 190 is in the kilonewton, उसको हम क्या करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे. so 190 multiplied by 1000 divided by 530.24. this is your strength of the weld Newton per mm. that will give us the length of the weld required as 350 or it is also the 360 mm. so here the length of the weld required will be equals to 360 mm. okay, जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है उसको हमको कनेक्शन प्रोवाइड करना है. फॉर दैट पर्टिकुलर कनेक्शन to carry a load of the 190 kilonewton we required a weld length of the 360 mm. okay, so now
अगेन एज दिस इज द एंगल सेक्शन देयर विल बी अ सेंट्रॉइड जो एक्सिस होगा वो आपका सेंटर पे नहीं होगा, इट विल बी एट द जो भी आपका दूसरा आउटस्टैंडिंग लेग है उसके पास में होगा. Therefore, the length on the both faces, okay, जो आपका top face होगा and the bottom face होगा on this particular face, the length of the weld will be different. Okay, we cannot just take 360 divided by 2 because here it is a angle section. Therefore, the length of the weld at the top will be different, length of the weld at the bottom will be different to counteract the CG movement. Okay, जो भी आपकी CG की मूवमेंट होंगी उसको काउंटर करके आपको एक ऊपर ज्यादा नीचे जो आप सॉरी ऊपर कम और नीचे जो आपका ज्यादा होगा. Okay, so therefore we have to calculate the weld length of the weld on the face A and the length of the weld on the face B. So again taking the movement about the centroidal axis. Okay, first two equation हम form करेंगे. First equation will be equals to obviously LWS, that is the length of the weld on face A plus length of the weld on the face B. Okay, that is LWD equals to 360. दोनों मिला के आपको कितना total length provide करनी है? We have to provide the total length of the 360 mm. Okay, so here obviously LW1 plus LW2 should be equals to 360 mm. Okay, next is by taking the by taking the movement about this particular centroidal axis. यहाँ पे आपका जो ये दोनों की जो मूवमेंट आने वाली है, दिस फोर्स ड्यू टू दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, सो दैट द पर्टिकुलर सेक्शन जो होगा आपका वो इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपको यहाँ पर जो पर्टिकुलर मूवमेंट है वो 0 होनी चाहिए. सो देयरफॉर first length of the weld multiplied by, so this will be your length of the weld multiplied by this particular distance and again LWB multiplied by this particular distance. Okay, so we know that the CXS, again this particular value is calculated from the steel table. ये जो आपकी वैल्यू ये स्टील टेबल में आपको मिल जाएंगे. ओके, स्टील टेबल से CXS आपको कितना मिला है? द सेंट्रोइडल एक्सिस इज एट द 28.7 फ्रॉम द बॉटम. So therefore length of the weld LWD multiplied by 28.7. okay, the moment will be equals to LWB multiplied by 28.7 should be equals to LWD multiplied by ये distance, this particular distance will be equals to obviously total distance is your 90. So 90 minus 28.7, that will be your distance. So LWA multiplied by 90 minus 28.7. So that will give us the again another equation of the LWA equals to 0.46 at LW. Again, solving this particular numerical, putting in this particular value, we get the value of the LWB as a 245 and LWA as a 1147. Okay, so इसको राउंड ऑफ करके हम क्या करेंगे? Adopting the 250 length of the weld on the face B. Okay, जो भी आपका face B है वहाँ पे आपकी ज़्यादा length है, so here we are going to consider it as a 250. At the top we are going to consider it as a 120. Okay, नीचे आप क्या करेंगे? 250 mm की वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और ऊपर क्या कर रहे हैं हम? 120 mm की वेल्ड जो है प्रोवाइड करिए. मिनिमम इज रिक्वायर्ड इज 245 और 114. यू कैन आल्सो टेक इट एज अ 250 एंड 115 और यू कैन आल्सो टेक इट एज अ 250 एंड 120. ओके, इससे ज्यादा लेनी है आप थोड़ा 10-20 से अगर ज्यादा कर लेते हैं, इन दैट केस इट विल बी फाइन. ओके, अगेन वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट द गसेट प्लेट की थिकनेस क्या आपकी 8 mm ऐसा हम एज्यूम करने वाले हैं. ओके, सो वंस अगेन जैसा जिसके मैंने आपको पिछले बोला कि डिजाइन करते हुए आपको सिर्फ दो जो है वो अलग है, दैट इज द ट्रायल सेक्शन एंड द कलेक्शन डिजाइन. वंस वी हैव डिजाइन द कनेक्शन, next step are similar to the analysis of the tension member. So again analysis in particular tension member, that is the checking for the design strength. Okay, again checking for the design strength, first आपका TDG. So again TDG will be equals to AG multiplied by Fy. Again AG की वैल्यू आपका पता है, Fy की वैल्यू पता है, gamma m0. So putting all of that particular value, we get the value of the TDG as a 196.5 kilo Newton. Okay, similarly the value of the TDM, that is the critical section. Again beta की वैल्यू again आपका पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो है 90/6. ओके, 90 mm. अगेन लॉन्गर लेग इज कलेक्टेड, दिस इज योर 19 mm, आउटस्टैंडिंग लेग इज योर 60 mm. सो देयरफॉर W, that is the length of the or the width of the outstanding leg, will be equals to 16 mm. next the again 90/60/6 है, therefore thickness will be equals to 6 mm. Fy Fu same. BS again welded connection है आपका, therefore the BS will be equals to W. Okay, BS क्या होगा आपका? W हो जाएगा. Again welded connection आपका, therefore it will be the distance between the whatever weld is there and the outer portion of this particular unconnected leg. So ये distance कितना है आपका? Obviously this is equals to 60 mm, so it will be equals to 60. Again length of the connection, while calculating the length of the connection we have to take the average of this particular two lengths. So top की length क्या है आपकी? 120. okay, bottom की length क्या है आपकी? 250. so taking the average of this particular length for the length of the connection, so length of the connection will be equals to 250 plus 120 divided by T.
divided by 2, so that we will get the average connection length as a 185 mm. Okay, top पे आपकी length different है, bottom पे आपकी length different है. Okay, so you cannot take the minimum length or maximum length, rather we are going to take it as a average of this particular two length. Okay, length of the connection will be average of this particular two length. So 250 plus 120 divided by 2, इस तरह से हमने क्या कर लिया, उसका average कर लिया. Again putting this particular value in our numerical, we get the value of the beta as 1.249. So again, as it is greater than the as it is greater than the 1.40, sorry, it is less than the 1.44, as well as it is greater than 0.7. Therefore again we can take this particular value while calculating the TDN. So again TDN की इसमें input करते हुए, here the value of the ANC, that is the net area of the connected leg. Again here net area आपको consider करना है, but here there is no bolt hole is there. Therefore again net area will be equals to B multiplied by T. Again B की वैल्यू क्या होंगे, आपको माइनस क्या करना होगा, आपको थिकनेस डिवाइडेड बाय 2 जो है आपको माइनस करना होगा. सो देयरफॉर B will be equals to 90 minus 6/2, thickness is 6 mm, multiplied by the thickness again 6 mm, that will give us the ANC as a 522 mm. Similarly AGO जो है आपका ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, अगेन B multiplied by T. अगेन हियर अगेन B की वैल्यू क्या होंगे, आपकी B माइनस जो भी आपका विड्थ होगा माइनस T/2. Okay, so again here thickness जो आपकी 6/2 आपको माइनस करनी, multiplied by 6, that will be 342. So putting all of this particular value in our section, we get the TDN value as a 251.18 kilonewton. हमारी जो वैल्यू मिल जाती है 251.18 kilonewton for the TDN. So next is your strength governed by the block shear. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा changes है. Okay, in this particular case again the two main difference are there. It is a welded connection. Okay, आपका welded connection है, और उसके साथ साथ ही आपकी जो लेंथ ऑफ द वेल्ड है इज डिफरेंट एट द टॉप एंड डिफरेंट एट द बॉटम, एज वेल एज वर्टिकल साइड पे आपका कोई भी जो वेल्ड है वो प्रोवाइड किया गया नहीं है. ओके, सो हियर अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज दैट ये जो आपका पोर्शन है, ओके, दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो होगा, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो आपका पर्टिकुलर पोर्शन होगा, ओके, दिस पर्टिकुलर जो ब्लॉक होगा, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज गोइंग टू कम आउट. ओके, जो गसेट प्लेट का ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, ये जो पर्टिकुलर गसेट प्लेट का पार्ट होगा, दैट इज गोइंग टू कम आउट. सो वी हैव टू डिजाइन, वी हैव टू कैलकुलेट द strength of the block, that particular block in the shear. So therefore the gross area in the shear will be equals to 250 multiplied by 2. ओके, सो ऑब्वियसली ये जो है आपका पूरा ये पर्टिकुलर एरिया जो आपका निकल के आने वाला है. ओके, दिस पर्टिकुलर ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन होगा, थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं मैं. ये जो आपका पूरा सेक्शन है, ओके, दिस पर्टिकुलर होल सेक्शन इज गोइंग टू कम आउट. ओके, इतना जो आपका पर्टिकुलर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल सेक्शन है, दिस इज गोइंग टू कम आउट. सो देयरफॉर अगेन दिस पर्टिकुलर शियर जो होगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शियर होगा, तो उसकी विड्थ आपको पता है, दिस पर्टिकुलर विड्थ इज इक्वल्स टू 250 mm. ओके, अगेन हियर द ग्रॉस एंड नेट विल बी सेम एज देयर इज नो बोल्ट होल. सो ये आपको पता है कि दिस इज योर 250 mm. ओके, मैक्सिमम आपकी जो बॉटम की वेल्ड की लेंथ थी, दैट वाज द मैक्सिमम, दैट वाज 250. देयरफॉर वी आर गोइंग, दिस इज योर 250. एट द टॉप आल्सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो आपकी विड्थ होगी, दैट इज इक्वल्स टू 250. देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 2. दिस विल बी योर बी. ओके, दो क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि टॉप और बॉटम का. उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, दिस पर्टिकुलर 8 विल बी योर thickness of the gusset plate. This will be your thickness of the gusset plate. This will be your thickness of the gusset plate. So obviously यहाँ पे जो आपकी gusset plate है, we are going to assume that the gusset plate is of the 8 mm. Again remember that in case of the welded section, as this particular block of the एंगल का तो ये ब्लॉक निकल के नहीं आ सकता, क्योंकि एंगल को आउटस्टैंडिंग लेग भी यहाँ पर होता है. सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी come out from the gusset plate. जो gusset plate होगा उससे ही वो निकल के आएगा. Therefore here we are going to consider the thickness of the gusset plate. Remember that why we are taking here thickness. Okay, यही changes होता है welded connection और bolted connection के block shear design में, कि यहाँ पे हम क्या thickness किसकी लेते हैं, तो gusset plate की लेते हैं. Cause here whatever the section is coming out as a block will be of the gusset plate. Therefore we are taking the thickness of the gusset plate. Okay, again AVG and AVN, again यहाँ पे कोई भी bolt नहीं है, therefore AVG will be equals to AVN. Similarly ATG will be equals to, again as I said, again आप बोलोगे कि यहाँ पर तो vertical direction में आपको कोई भी weld provide नहीं किया गया है. ओके, ठीक है, at the top the weld is there, at the bottom weld is there, but the जो vertical direction में here we are not providing any kind of the weld. But remember that
अगर ये पार्ट को अगर बाहर निकल के आना है, इफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हैज टू कम आउट, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ से भी उसका टीयर आउट होना जरूरी है, या फिर जो टीयरिंग फेल्योर है वो होना जरूरी है, टेंशन फेल्योर होना जरूरी है. देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर वर्टिकल पोर्शन आल्सो. ओके, सिर्फ यहाँ पे दो जगह आपकी वेल्डेड प्रोवाइड है, बट हियर द वेल्डेड कनेक्शन इज नॉट देयर, सो वी शुड नॉट टेक ये जो आपका वर्टिकल एटीजी है वो आपको कंसिडर नहीं करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आपका पर्टिकुलर ब्लॉक जो है शेयर फेल होने वाला है. फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक फेल्यूर, ये जो आपका पर्टिकुलर पोर्शन है, यहाँ पे भी आपका शेयर फेल्यूर, सॉरी यहाँ पे भी आपका टेंशन फेल्यूर जो है वो होना चाहिए. Therefore, we have to consider this particular vertical direction also. So therefore, considering the ATG as a 90 multiplied by 8, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ATG तो आपका वहाँ पे कोई भी welded connection नहीं है, so we can directly take ATG as a 0. This will not be the condition as to fail it as a block. Okay, एक block वहाँ से निकल के आना चाहिए, वहाँ पे आपको vertical direction में भी failure होना चाहिए. Therefore, ATG will be equal to 90 multiplied by 8 equals to 720 mm square. ATN will be equals to 720 again. ATG and ATN gross area and net area will be same as there is no bolt connection. So again, putting all of this particular value in our particular formula, we get the value of the TDB1 as a 737 4 kilonewton, 845 TDB2 equals to 845.4 kilonewton. Remember that यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू क्या है, क्योंकि here there is no net area. So always in case of the block shear जो हमारा welded connection है उसकी वैल्यू ज़्यादा ही आती है compared to the bolted connection. So again, summary करेंगे हम. Strength of the weld governed by the cross section is 196.5. Again, as governed by the critical section, TDN will be equal to 255, TDB1 is 737, TDB2 845. Strength of the connection is equals to total length of the weld equals to 350. Okay, नीचे की आपकी कौन सी लेंथ ऑफ द वेल्ड इज 250, ऊपर के आपके लेंथ ऑफ द वेल्ड 120. सो 120 प्लस 250, 120 प्लस 250 विल बी इक्वल्स टू 370. ओके, वो आपका इक्वल टू हो जाएगा 370 मल्टीप्लाइड बाय 0.53. दिस इज योर किलो न्यूटन पर mm. ओके, लेंथ, दिस इज योर strength of the weld in kilonewton per mm. So 370 multiplied by 0.53, that will give us the strength of the connection as 196. So minimum is obviously 196, so it is greater than 190 kilonewton, therefore our design is again safe. Okay, so this is how you can do the connection of the design numerical for the tension member. Okay, now the as I said, in case of the analysis and the design, in case of the analysis भी आपका सिमिलर है, डिजाइन भी आपका सिमिलर है. सिर्फ डिजाइन में आपका क्या दो अलग स्टेप, आपको बोल्टेड आपको कनेक्शन भी डिजाइन करना होता है और सेक्शन जो है वो भी आपको डिसाइड करना होता है. बट अदर देन दैट ऑल द पर्टिकुलर जो भी आपका फॉर्मूला या फिर जो भी स्टेप होंगे वो सेम है. अगर यहाँ पे आपका डबल एंगल सेक्शन आ जाता है, इन दैट केस अगेन आपको सिर्फ ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करते हुए डबल करना है. ओके, जैसा हमने प्रीवियस एनालिसिस ऑफ द टेंशन मेंबर में हमने डबल एंगल का यहाँ पर वेल्डेड कनेक्शन का डिजाइन दिया था. ओके, सो अगेन दैट विल बी अगेन इट विल बी लाइक दैट. वही आपको उसी तरह से आपको यहाँ पर कनेक्शन जो है वो करना है. ओके, सो डिजाइन फॉर द सिंगल एंगल सेक्शन और द डबल एंगल सेक्शन विल बी सेम, ओनली द एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कई बार आपको डबल लेना होगा कई. सो दैट विल बी ओके. सो ठीक है, that will be all for our today's lecture of the design of the tension member. This way you can design the tension member for the first welded connection as well as the bolted connection. Okay, assignment or the practical for this particular numerical will be already published in the, I will publish them in the, ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर देता हूँ, वहाँ आपको सॉल्व करना है. अगर उसमें कोई आपको डाउट्स होता है, इन दैट केस प्लीज व्हाट्सएप में, अगर मुझे उस पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं भी डाउट होता है, इन दैट केस प्लीज व्हाट्सएप में, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई योर whatever doubts are there. Okay, so ठीक है. और ऐसा नहीं कि आपको उसके अदर भी आपको डाउट होगा, ऐसा नहीं आपको सॉल्व सब कर दिया, लेकिन आपको कोई भी डाउट होगा, इन दैट केस अगेन यू कैन आस्क मी. ओके, by WhatsApp. Okay, so thank you for all. This will be all for our today's lecture. You can leave this lecture now.